जसप्रीत भाई कंग्रेचुलेशन पहले तो, बट पिछले 6-8 महीनों में आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे इसको रीड आउट करते हो? मतलब कभी लिखा जाता है कि आप इतने देर के लिए बाहर हो गए, कभी लिखा जाता है कि करियर खत्म हो जाएगा, एक इंजरी और हो जाएगी। एज एन इंडिविजुअल आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? क्या आप मानते हो कि ग्रेविटी उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि भाई आपके बारे में कोई भी कुछ भी लिख सकता है? और दूसरी चीज़ ये जाननी थी कि पर्थ में कप्तानी करने के बाद ऐसा लगा था कि आप ही नेक्स्ट इन लाइन हो कैप्टन के तौर पर। क्या डिस्कशंस हुए जब आपसे चीजें आगे बढ़ी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो वर्कलोड मैनेजमेंट हो या बॉडी को लेकर के बात हो? थोड़ा सा कप्तानी के बारे में जानना चाहते हैं। लोग जो लिखते हैं वो तो मेरे हाथ में है नहीं, और मैं किसी को कोई सीख देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मेरे बारे में ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो। एवरीबडी इज फ्री टू राइट व्हाटएवर दे वांट। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड हमारे कंट्री में क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर एंड हेडलाइन बनाने के लिए समटाइम मेरा नाम साइड में आ जाएगा तो व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है, तो आई डू अंडरस्टैंड। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो मेरे दिमाग में आ गई बात तो मैं बिलीव करने लगूंगा। मुझे चाहिए कि मैं जैसा हूं और मैं जो बिलीव करता हूं वो चीज डिक्टेट करेगी। कोई और जो चाहता है मेरे को उस तरह खेलना चाहिए, मैं वैसा नहीं हूं। मेरा जो प्रिपरेशन रहा है या जो मेरा आइडिया रहा है, मुझे हमेशा इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना था। मैं अपने बिलीफ पे क्रिकेट खेला हूँ, मैं हर फॉर्मेट भी अपने बिलीफ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने सिर्फ ना ही बोला है। मेरे को पहले बोला पहले तुम नहीं खेल पाओगे, फिर 6 महीने खेलोगे, फिर 8 महीने खेलोगे। खेलते 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 मेरे 10 साल कंप्लीट होने आए इंटरनेशनल क्रिकेट में। 12-13 साल से मैं आईपीएल खेल रहा हूँ। अभी भी लोग वही बोलते हैं कि अभी जाएगा अभी जाएगा। लोग वेट करते रहो, मैं नहीं सोचने वाला हूँ उसके बारे में। मैं अपना काम करते जाऊंगा, हर 3 महीने 4 महीने में आ जाएगा, ठीक है अब जाएगा अब जाएगा, देखते हैं, ठीक है। जब तक भगवान ने लिखा है तब तक खेलूंगा, अपना बेस्ट प्रिपरेशन करता हूँ और उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ भगवान के ऊपर के जितनी मुझे बरकत दी है भगवान ने, उसको मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँगा और इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। और कैप्टनसी का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऐसा मेजर कुछ हार्ट ब्रेकिंग था नहीं, बिकॉज मेरी बॉडी का मुझे ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली मैंने डिस्कशंस किए, जो लोग उन्होंने मेरी सर्जरी की है, जो लोग मेरे को मैनेज करते इतने साल से मुझे देखते आ रहे हैं, तो मुझे वो सिचुएशन में नहीं आना था कि मैं टीम को लेट डाउन करूँ, बिकॉज एज ए लीडर मेरे को अंदर होना ही पड़ेगा, हर मैच में होना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं शायद थोड़े मैच रहूंगा थोड़े मैच नहीं करूंगा, एंड इट इज नॉट फेयर ऑन द टीम। कंटिन्यूटी भी चाहिए होती है टीम को, तो उसके लिए सिर्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम एंड नॉट टू पुट मी इन अ प्रेशर वाला सिनेरियो कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट एज अ प्लेयर, व्हेन आई एम देयर आई कैन हेल्प द टीम। तो वही मेरा थॉट प्रोसेस था उसके पीछे। तो इट वाज ऑब्वियसली करना था, मन भी था, बट इंडियन क्रिकेट से बड़ा तो कुछ है नहीं। सो ऑब्वियसली इफ यू विन मैचेस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने सोचा कि दैट इज द बेस्ट कॉल फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। Just a little insight into your mindset when you get into a match levels where you think that you're not going to be playing all the matches in the test series. So does that alter how you think when you go into bowl in the matches that you are playing? No, you don't look at what is going to happen in the future. You are there in the ground at that moment. You have to do a job. So at that moment, I'm trying to assess the wicket. I'm trying to assess what is happening. What are my options? How is the wicket behaving? Who's the batter there? What is he thinking? How do I outsmart him? Or what do I do? So what does the team require? I look at all of those things at that moment. I was not thinking about what will happen or how many games am I supposed to play. At this moment, focusing on the test match. When the match is over, then you think about all these combinations and combinations. Just in terms of looking for wickets, but obviously there is Yes. so much expectation of you. So does that sort of alter how you approach a match, not necessarily how when you're... No, not really. Because if again, as I said, that if I start to play on everybody else's expectation and they look at me that this is my name and this is my ranking and this is how I'm supposed to bowl, then I'm carrying a lot of baggage and that's very difficult to carry. I'm a human being. I'll make mistakes and everybody will make mistakes. But I look at myself, if I've ticked all boxes, I've given it my absolute best. I ask myself this question at night, did I give it my absolute best? And if the answer is yes, I quietly go back to sleep. League is now 96. How is the wicket behaving now? Because 2 sessions you have bowled. And what is good enough to go for a kill in the 5th day? As many as we can. At this moment, it's a pretty good wicket to bat. Little bit of two pace is what we can see, but nothing. I don't see any big demons in the wicket or the massive deviation. Yes, due to the weather around, sometimes the new ball will swing, but that is what you expect in Test cricket. But so far, we're not seeing any demon in the wicket or any funny business that has happened in the wicket. Yes, as much as we can, we'd like to keep a big total, so that gives us the cushion. So it's a relatively good wicket to bat on. So we want to have that cushion and try to post a big total. Just with formats change, captains change, but that expectation from you to get a wicket every time you come into ball is always there, no matter what point of the game you come into ball.
How do you mentally deal with that? Because today also before the break, Shuman gave you the ball, you picked up those last 2 wickets. Uska added pressure mentally आपके ऊपर रहता है, and how do you go about it? Because do you mentally also think कि मेरे हाथ में ball है, मैं तो wicket ले ही लूँगा इस over? No, I don't think like that. So as I said, that everybody's expectation is not my problem. I have to look at myself. If I'll start to cater and think about so many people are expecting so many things, then I'll not be able to focus on the game. I know, as a senior player, they have responsibility, but everybody is equally responsible, and that is what we want to do. We want to contribute as a team, and everyone wants to take more responsibility. So this is what I try to do. I know there's a lot of things that go on social media, expectations, but I try and stay away from that because I don't want somebody else's thoughts to creep into my mind. Obviously, it's not as easy as it's easy to say that okay, just keep a blind eye. But I try and stay away from all of that. I try and focus on my things because if I start to focus and cater to everybody else's expectation, it's a downward slope and it will be very, very difficult. So and try to do that. Try to focus on myself. And